on that note, I want to sort of introduce today's expert, so which is we all eagerly waiting for. That's Abhishek Gupta from Mamaearth. He leads D2C at Mamaearth, Senior Vice President of Growth. He's obviously an expert. He's been come before from us, and whenever he does a session, one of those highest rated sessions we've had, especially on a topic which is very, very interesting and challenging, right? People wonder, करना तो है, लेकिन कैसे करना है और लोग को वापस, how do we get them back? Is sort of a challenge, and we sort of uncover that in this session. Before that, obviously at Mamaearth, before that he was leading performance marketing at QMath. He was earlier head of marketing at Spinny. From an educational background, he's an IIT Delhi alumnus. So on that note, 2-3 things. Please turn on your videos. Make sure Abhishek is feeling at home, and obviously ask him a lot of questions. And we put our hands together and we sort of clap. And so yes, please hold my hand. Join me. It'll be easier. So thank you. And Abhishek, welcome to Expert. It is yours. Thank you, Sharad. Thank you, everyone. I think great seeing so many people from the D2C industry. जब मैंने 4 साल पहले ज्वाइन किया था D2C, I haven't thought कि इतने स्केल पे D2C वर्क होगा कभी भी. But great to see so many of you and so many founders trying to make their own startups, trying to make sure they disrupt this industry. So happy to help, and let's start the session. And I think a couple of things. So I heard about the email marketing and the WhatsApp के 2 account. So get in touch with your account manager. अगर नहीं है तो I will make sure I will make a connect. 2 account नहीं होने चाहिए. It's I think आपको कभी वो blue tick नहीं मिलेगा future में, and it might block one of your accounts. अभी small scale पे you will able to do, but it's not recommended. Brand authenticity भी कम होती है. And in future, Facebook will link WhatsApp to your or Instagram with your account. तो ad के scores पे भी impact आना शुरू हो सकता है. So it is a growth hack, but try not to use. Apart from email marketing, yes, email marketing works, but बहुत dedication चाहिए. So WhatsApp on the fly work कर जाता है. Email marketing के लिए we need experts. So we'll deep down in this session, but yes, these are the points. I think we are at a good stage. जो हम इस पे सोच रहे हैं. I think most of the founders at this stage hardly think about the retention or the CRM as a funnel. So we'll work on that. Let me start sharing my screen first. Do let me know if you guys can see. Yeah, we can see it. Sure. Yeah. Just a quick intro. I think Sharad already mentioned. I have been working in this industry for around 10 years. Mostly D2C brands, Spinny, QMath, Mamaearth now. Mamaearth go around 3.5 years ago. I joined in 2019 and Jan 2019. So I'm also an Indian investor. So if you guys, any one of you want to get in touch for any of the investment, happy to help, happy to maybe work on the deck with guys, make the connect with the any of the VC, etc. So yep. So main question is why focus on repeats. Generally, when I talk to a lot of people, especially when they are at a initial stage, questions आते हैं क्या repeat focus करें क्यों? अभी तो बहुत small है. Maybe let's focus more onto the acquisition side. Customer acquire तो कर लें, समझ तो लेते हैं. Maybe product market fit में if we go deeper, वो fit आएगा कि भी नहीं आएगा. So there are a couple of things which you need to answer first. So जो main problem आती है कि जो cost of acquisition है, अब new customer acquire करते जाओगे तो marketing बहुत high है. 6 to 7 times as compared to the repeat customer. And if your repeat cohorts are really good, वो उससे भी और worse हो जाता है. So if you want to make sure that you are a profitable startup, you are a profitable D2C company, you need to focus on retention. I think this point is, I think most of you already know. And as you also know कि market में जो cost to market consumers, वो CPMs जो होते हैं Facebook, Google के, वो बहुत aggressively increase हो रहे हैं last couple of years से. COVID में थोड़े down हो गए थे, but they will increase. This is the US trend, so US में काफी increase to around 15 तक हो चुका है, and India is a bit lagging 2 to 3 years, but India maybe वो per click cost might increase to a 10, 15, 20 level rupees पे, जो US में I think already $1 to $1.5 per click हो चुका है. So those are the things कि new customer को reach out करने में ही बहुत पैसा लगने वाला है. So rather than focusing on new customer, if you can utilize your repeat customer cohorts, it's really great. Frankly speaking, from the past experience, there are 2 things. अगर हम repeat को अगर exhaust भी नहीं करते हैं, if more onto the lines of
अगर if my startup is not into the lines of कि वो repeat customer के लिए बना ही नहीं है, suppose Spinny था हमारे लिए, तो Spinny was not into the lines of कि मैं repeat customer लेके भी आऊंगा कभी भी, because in a life cycle वो hardly 1 या 2 cars buy करेगा कभी भी. तो what we were focusing on the satisfaction part, the customer किस तरीके से experience करता है, and when the customer is satisfied, the referral part increases a lot for us. And if we see the base of both getting more repeat customer, or getting more repeat transactions, and getting more referral from those consumer, everything lies or everything start from customer satisfaction. So आपका business increase करने का बहुत ही convenient या फिर cost effective way है to have a more satisfied customers in your cohorts. Okay, so starting with that, तो part to loyalty lie करता है हमारा, जो स्टार्टिंग करते हैं एक्विजिशन से, देन सेकंड स्टेप आता है हमारा कस्टमर एजुकेशन, बॉन्डिंग एंड द एंगेजमेंट फेज. नेक्स्ट आता है जो हम डिफाइन कर सकते हैं कमिटमेंट कब कर रहा है कस्टमर. सो फॉर अस वी डिफाइन एज कि अगर इफ अ कस्टमर इज डूइंग अ सेकंड ऑर्डर, it's a commitment stage for us. Okay, it can be different for different type of a business. Maybe for a licious as a category, maybe third order तक उसे buy करना होगा. हमारे लिए second order इसलिए होता है because we know that if a customer has placed a second order, third order के बाद chances of placing another order increases to around 20-30%. तो वो loyal customer हमारा बन जाता है. And then if the customer is placing a second order, then the third order is then it's considered as a loyal customer. तो loyal customer की funnels क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या चीजें हम वहाँ कर सकते हैं. In this whole customer loyalty cycle, you see that the satisfaction is the core of all these things. So satisfaction सब पे lie कर रहा है. हर stage पे customer will judge you that whether what's the experience, what's the perceived value, whether he's satisfied with the experience or not, whether he's satisfied with the product or not. तो ये सबको आपको judge करेगा. So satisfaction is one of the core at each of these funnels, each of these cycles. And अब हम loyalty की तरफ बढ़ेंगे कि how we can make more repeat purchases. But if the satisfaction is there, your word of mouth will also increase, and hence your customer acquisition cost will decrease. Okay, that's one of the principles you need to keep in mind when you are defining or maybe acquiring customer. Don't acquire in haste कि बहुत सारे customer acquire कर लिए. If you're not able to service those customers and not able to service the customer in the best experience possible, you should not acquire at a rapid pace. So that's one of the principles you should keep in mind. So अब आते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन मॉडल कैसे बनाना चाहिए, या फिर दिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स जो हम मामाअर्थ में फॉलो करते हैं. सो कस्टमर की एक जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, सो यू कैन डिवाइड इन टू पार्ट्स. सो परसीव क्वालिटी क्या है प्रोडक्ट. सो फॉर मामाअर्थ सपोज अनियन हेयर ऑयल है, सो व्हाट सॉर्ट ऑफ वैल्यू इट विल क्रिएट, व्हाट सॉर्ट ऑफ maybe experience the customer must have, कितना ऑयली होना चाहिए, कितना वो स्टिकी होना चाहिए. तो परसीव क्वालिटी क्या है. परसीव वैल्यू क्या है. वैल्यू कैन मीन टर्म्स ऑफ वैल्यू फॉर मनी एज वेल, और इन टर्म्स ऑफ अदर वैल्यूज जो ब्रांड लाइक कर रहा है. तो इसके बेसिस पे कस्टमर डिफाइन करता है कि यार मैं ब्रांड से क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. एंड दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ मार्केटिंग यू आर डूइंग इनटू द आईज ऑफ कस्टमर. तो परसीव वैल्यू वहां से बहुत डिपेंड करती है. We are a house of brands. So Mamaearth is one of the brand which is more onto a natural toxic free. The other brand is Dermaco. Dermaco is more onto the lines of actives जो niacinamide होते हैं, जो I think acne spots के लिए हैं. There are salicylic acid for the acne marks. The brand positioning of Dermaco is more onto the lines of the outcome it will create after using the product. But Mamaearth में इतना outcome पे believe नहीं. It's more of a toxic free product use करना है, regular usage. तो the perceived value बहुत डिपेंड करती है किस तरह से आप मार्केट करते हो, किस तरह से आप प्रोडक्ट को पिच करते हो कस्टमर को. एंड दैट्स हाउ द होल एक्सपेक्टेशन सेटिंग इन द आईज ऑफ कस्टमर हैपेंस. एंड फाइनली द कस्टमर सेटिस्फेक्शन हैपेंस कि जो परसीव वैल्यू मीट करी नहीं करी हमने व्हाइल सेलिंग द प्रोडक्ट, ड्यूरिंग द होल सेलिंग प्रोसेस, एंड आफ्टर सेलिंग एज वेल. इफ and after the customer satisfaction cycle, it can be positive, it can be negative as well, or can be neutral. You should take the customer feedback and make sure that if the customers are not happy, you need to give the take the feedback, make sure you work on the feedback, and turn that customer either on a neutral or maybe a positive aggressive for the brand. So usse wo loyalty generate hogi. Okay, so this is the one of the basic model जो हम
follow करते हैं in terms of how we can define the customer satisfaction and how we can make sure that कि हम वो loyalty की तरफ move कर रहे हैं, right? Now coming to कि हम measure कैसे customer satisfaction, because बहुत ज़्यादा problems आती हैं कि ओके डिफाइन तो कर लेते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन, बट मेजर कैसे करना चाहिए, कब मेजर करना चाहिए, हमारी ब्रांड के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है डेटा ड्रिवन अप्रोच बेटर होती है। तो सबसे पहले है कि आफ्टर प्लेसिंग एन ऑर्डर यू नीड टू मेजर कि फर्स्ट कि whether you like the product, whether you will promote the product to other people or not, what things you liked or not. So generally NPS defined होता है 0 to 10 के स्केल पे। I will also show कि कैसे उसको in the next slide how to measure that. But after placing an order क्या उसका स्कोर होना चाहिए कि आप वो ब्रांड को किसी को और को प्रमोट करोगे नहीं करोगे। डिलीवरी के बाद एक्सपीरियंस क्या है, तो जनरली प्लेसिंग ऑर्डर के बाद आपको आइडिया लग जाता है कि जो आपकी मार्केटिंग एक्टिविटीज हैं, आपकी जो वेबसाइट या ऐप है उसका क्या इम्पैक्ट है कस्टमर पे, whether they are satisfied or not. Okay, after delivery the whole delivery experience, whether delivery was in time or not, whether delivery it was in satisfaction manner or not, what is the experience with the delivery partner, etc. Communication during delivery. And then third आना चाहिए कि 2 weeks of use के बाद at least, so depending on the category as well as brand as well, but जनरली अगर आपने प्रोडक्ट बाय करा है तो विद इन 2 वीक्स वो उसको एक बार यूज कर लेता है जनरली कस्टमर, डिपेंडिंग ऑन कि आपका कैटेगरी क्या है। अगर वो ज्यादा है तो वी नीड टू वर्क ऑन कि उसको हम थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते हैं, राइट। सो 2 वीक्स के बाद हमें एक और बार मेजर करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ अ कस्टमर इज कॉन्टेक्टिंग यू इन बिटवीन ऑफ दीज साइकिल्स, then I think Aditya, I think you have raised hand. Can you unmute and tell me what if there any doubt or something? Yeah, Abhishek, my question was so are you saying the NPS should be taken from the user at all of these steps, which is after placing the order, after delivery, and after 2 weeks? Because Yes. right now we take it only say after delivery. Right. So generally there are 3 type of touch points. So website पे एक marketing का touch point हुआ and website पे whole website experience touch point हुआ। अगर आप डिलीवरी पे लेते हो तो जनरली व्हाट कस्टमर इज गिविंग द फीडबैक ऑफ व्हाट द डिलीवरी एक्सपीरियंस इज ऑल अबाउट, राइट। वो आपको कहीं मार्केटिंग के बारे में नहीं बताएगा। अब आपको प्रोडक्ट के बारे में जानना है, व्हाट द प्रोडक्ट, वेदर द प्रोडक्ट इज क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट और नॉट, जो आपने सपोज प्रॉमिस किया था वो डिलीवर हुआ कि भी नहीं हुआ, सेटिस्फाई विद द प्रोडक्ट और नॉट, तो वो भी नहीं पता आपको। सो एट ईच एंड एवरी टच पॉइंट you should take the feedback. Each and every NPS is defined as कि वो किस KPI को इम्पैक्ट कर रहा है या फिर किस चीज को इम्पैक्ट कर रहा है। प्लेसिंग एन ऑर्डर इज इम्पैक्टिंग योर मार्केटिंग और द एक्टिविटी रिलेटेड टू योर वेबसाइट पे क्या कम्युनिकेशंस हैं, इफ अ कस्टमर कम्युनिकेशन इज वर्किंग रियली वेल और नॉट, वेदर अ वेबसाइट टेक इज वर्किंग वेल और नॉट, डिलीवरी एक्सपीरियंस क्या है। सो ईच एंड एवरी NPS विल डिटरमाइन कि आप किस स्टेज को ठीक कर सकते हो। If your delivery experience is poor, then you have to work on delivery. So frankly speaking, initially our website NPS was not that great. We were on WooCommerce. We tried multiple things, but things didn't work out. We shifted to a custom website. Afterwards, उसके बाद when the order were increasing, delivery NPS used to go down. Then we started working on delivery NPS. तो यहाँ पे पता लग गया कि कहाँ पे work करना है। And apart from that as well, when the customer contacts our customer care as well, or maybe a WhatsApp chat or journey, we generally take feedback. आपने maybe Zomato पे order place किया होगा या फिर आप Swiggy पे करते हो। After each and every conversation, they take a feedback whether you are satisfied with the conversation or not on those lines. So each and everything need to be taken care need to be measured so that you can take a required action on those NPS or on those feedback which is given by the customer. So just a quick follow-up, Abhishek. So right now the question that we ask is the typical NPS question, right? So how likely are you to recommend a friend or a family on a scale of 0 to 10, right? So would you change that question and customize it based on when you're taking it, or would you still continue to use the same question, just change the time of asking that question? Right. So depending on what sort of feedback you are planning to get. So generally हम क्या करते हैं, or maybe let's take an example, classic example of Urban Clap. If you go to Urban Clap, there are 2 questions written over there. First question, which is, will you recommend the brand to your family and friends? Second is, there is a space where they can write the feedback. So frankly speaking, when you are at the initial age of the brand, you don't know what should be the second question you should ask, right? So generally क्या होता है, जब आप feedback सब्जेक्टिव वे में लेते हैं,
you get to know that okay, these are the 5-6 areas customer is facing problem on, and this is the first area and you should ask the customer maximum upon. तो वहां से हमें आइडिया लगता जाता है कि आप क्वेश्चन डिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज फर्स्ट और सेकंड तो मे बी is much very much into the lines of defining कि आपको आइडिया लग जाएगा कि यार ये मार्केटिंग का क्वेश्चन पूछना है, टेक का पूछना है, डिलीवरी का पूछना है. बट आफ्टर यूज वाले में वी जनरली की प्रोडक्ट का फीडबैक किस तरह लेना है, हमें उसके इम्पैक्ट पे लेना है, एक्सपेक्टेशन सेटिंग्स पे लेना है, कहाँ पे लेना है. सो writing subjective questions after this NPS part will help you. Depending on that, you can redefine the first questions. Okay. So that's how the whole process should work. एक NPS जो मेजर करते हैं, रिकमेंड कब कर रहे हैं, आइडियली वो 2 weeks आफ्टर यूज होना चाहिए, rather than asking in the first place after placing an order. Placing an order पे वो हमेशा अच्छा ही रेट करेगा, बिकॉज आप ऐसे देखो कि maybe 1,000 customers are landing on the website. Out of those 1,000 customers, only maybe 50, 60 or 100 customers are placing an order. जो place कर रहे हैं आप उनसे पूछ लो. These are already a positive select who are already make their mind to buy a product. So if these guys will rate your brand, they will rate positively because वो पहले ही satisfied थे. That's why they have purchased your brand, right? So measuring NPS from after placing an order is not that ideal metrics. Okay, it will always show कि ये बहुत positive है, and it will always show a higher NPS. You have missing out the chunk of customer who are dropping from your website. तो उसके लिए हम काफी चीज कर सकते हैं. So you might have seen a couple of websites who give a pop-up when you are inactive for a while. Why you are leaving, or are you searching for something? We can provide some. If you can give some feedback why you are not buying from us, something on those lines. So उसको थोड़ा सा. So you need to see कि what customers are doing, or why customers are not purchasing from me, and how you can get the maximum feedback out of from those customers. So according to me, the NPS का फंडा होना चाहिए कि बिजनेस को इम्प्रूव कैसे करें, या फिर जो भी वो बिजनेस प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो सब प्रॉब्लम है उसको कैसे इम्प्रूव करें, एंड उसका फीडबैक कैसे हम कस्टमर से ले सकते हैं. Most of the times NPS जो इन्वेस्टर डेक उसमें यूज होता है कि इतने कस्टमर सेटिस्फाइड हैं. Ideally, currently I can see that कि investors भी mostly repeat rate पे ज्यादा believe करते हैं कि unit economics क्या है, कितने कस्टमर सेटिस्फाई हो के फर्स्ट परचेस कर रहे हैं, अगर सेटिस्फाइड भी हैं. सब्सक्रिप्शन मॉडल है तो आई थिंक उसमें यूनिट इकोनॉमिक्स ज्यादा आता है, बट इफ ब्रांड लाइक पर्सनल केयर समथिंग उसमें तो मैक्सिमम हम रिपीट परचेस पे फोकस करते हैं. Guys, it will be great if you can directly write the questions in chat. I can directly answer the question. Yes, Sahil, you can ask the question. Yeah, just quick 2 questions. One, I don't know if you're going to answer this, but later in the presentation. One is, what are sort of your learnings on recommended format or method of sort of gathering this insight? And 2, are there any tools that you would recommend to help? So I think पहले ये वाला पार्ट कवर कर लेते हैं. आई विल शो यू कि कैसे मेजर करना चाहिए, एंड देन आई विल आंसर द क्वेश्चन कि what sort of tools you can use and how you should measure. Okay. Thank you. Okay. So I think let's do one thing. After each section, I will take a pause, and in between sections, we can ask question. You can maybe ask a number of questions. Write the questions in the chat as well, so that I can answer directly from the chat only. Okay, it will be because I think the flow of presentation will be much better if I take questions after end of each sections. Okay, I hope that works. Okay, yeah, that works. So in social sentiment, so I think the social media trend is increasing a lot, and people people generally write on Twitter, maybe Pinterest, or maybe Mouthchart, some of these Facebook, Insta, some of these platforms about the sentiment. So you should also measure that what sort of sentiments customers are showing onto the various social media. There are a few of the free tools available in the market. You can use that. There are some of the paid tools, but generally वो आपको टैग करते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है. So if you can just have one of the interns, तो आपके लिए वो काफी बेटर हो जाता है. You measure such things कि social sentiments क्या है, reviews क्या है, comments क्या है, and you should answer them. You should make sure that ignore नहीं करें उसे, and you should keep the sentiments high as much as possible, ratings high as much as possible.
Same on for review as well. Your own website, your e-commerce website, you need to make sure that you don't delete reviews in your own website. वो बहुत ही negative part है. People generally judge you on based on that. They will write somewhere else कि आप review delete कर रहे हैं. You are managing the reviews. Make sure you, if some of the negative reviews are coming, you ask other of your customer to share the feedback on their website, to make sure you give some incentive to share the feedback on the website. But managing the reviews, etc., is not a thing you should do. It eventually you end up having a negative impact on your business in the later run. Okay, so वो नहीं करना चाहिए. Second, in terms of measuring NPS, I think वो काफी standard है. Promoters, minus detractors. So ये हम 0 to 10 का हम scale use करते हैं. If a customer is rating from 1 to 6, it's a detractor for you. जो 7 to 8 है वो passives हैं और promoters हैं 9 to 10 है. कई लोग इसको 5 के scale भी use करते हैं. We recommend 10 because थोड़ा सा better manage हो सकता है customer का. Because if a customer is just not satisfied is one of the things वो 4 rate करेगा वो passives में आ जाएगा. I think वो promoter होना चाहिए था because he's satisfied with the overall experience but not satisfied with one of the things. अगर उसको 4.5 rate करना है तो उसके बाद कोई option नहीं है. So 10 pointer scale is really important. Okay. कुछ benchmarks customer satisfaction के after placing an order कितना होना चाहिए? I recommend 60 के above. After delivery 50 के above होना चाहिए. So these are the few of the matrices जो we take care when we were into the early stages. After using a product, at least 60 above. FB Google rating should be 4 above. Ecom rating should be 4.3 above. Social sentiments should be 60% and above. FB Google rating थोड़ी कम इसलिए है because what we have seen, people who are not satisfied mostly come on social media and वहाँ पे negative लोग ज़्यादा होते हैं. As compared to e-commerce platform, वहाँ पे ज़्यादा positive लोग हैं. So those are the things we generally tend to manage. Social sentiments be 60 and above. And other channels for Reddit, Smart there are not specific matrices to identify, but if we can define the social sentiments यहाँ पे भी 50 to 60 above होना चाहिए, it's really great. Okay. Let me take the question. Is there any metrics or benchmark for retention rate? Yes, we will cover that in the future slides. Any other questions you guys have? I think I have raised, a couple of you have raised hand as well in the past. Abhishek, these are NPS numbers? These are the NPS numbers. Okay. Okay. So इसमें से detractor minus है. And ideally कुछ चीजें easy होता है. Frankly speaking, delivery पे maximum लोगों का down होता है because what things we were facing earlier as well. दिन का load कम होता था हमारा, तो they were around 50 to 100 orders on a daily basis initially. So generally the delivery partner used to pick up on every alternate day. So alternate day होता था तो एक दिन का tat वहीं पे increase हो जाता था. So those are the things we realized. Packaging material क्या होने चाहिए? So bubble wrap किस form का होना चाहिए? कितना wrap करना चाहिए? So all those things were not in line at that point of time. Then we analyzed on each of the problems why the people are maybe facing the issue, damage की issue कहाँ पे है? Detect in terms of why the people are giving us negative ratings. We talk to the customers. We so उस समय हमारे पास score भी था. So score भी था and साथ में comments भी था. So we read the comments as well. We talked to the customers. 3 things we realized. First is the delivery timelines. So we worked on the delivery timelines. We chose only a couple of delivery partners only. So Blue Dart was one of the preferred partners. Next delivery tha. We directly talked to the people in delivery that what should be the pickup timelines, etc. to make sure that pickup of the order is not delayed. हम packaging time पे कर रहे हैं, but pickup भी delay नहीं होना चाहिए. Third thing we realized कि product damage नहीं जाना चाहिए. Maybe for few of the items we need extra packaging material, bubble wrap, etc. What should be the GSM of the box which we are using? What should be the dimension, etc. तो वहाँ पे क्या focus होना चाहिए? So each and everything small. उसके बाद हमें realize हुआ कि few of the locations, few of the pin codes, people are opening the product, maybe opening the packet, and then maybe using the product or something, or थोड़ा damage जा रहा है. वो हमें realize हुआ कि since the tape was different, then we started using the branded tape. तो वहाँ पे कोई difference नहीं है. If the branded tape was not there, then we started charging our delivery partners कि it's your fault, you need to give us the claims. So those all things we started implementing. It was done over time, but it was one of the most important things which we wanted to implement because
as a D2C brand, we were not only competing with the other D2C brands, we were also competing with the e-commerce partner. Because जैसे ही customer satisfaction खराब होता था, people were satisfied with the brand, but they were not satisfied with the own website. They were more satisfied with the e-commerce, Nike, etc. And we don't want customer to switch platforms. So we started working on that. Now our current focus is how we can make sure the next day delivery and same day delivery to Amazon and Flipkart are planning to do what they are doing. So our focus is there as well. So we are making sure that the type of experience Amazon, Flipkart, Nike are providing, we should provide the similar experience or even the better experience from those platforms. Any question on the satisfaction side? Just to clarify, so basically, after placing the order, the question you would ask would be the typical NPS question, which is how likely are you to recommend a friend/family? And the second question will be an open-ended subjective question related to placing the order. And similarly for delivery and after using the product, right? हम change भी करते रहते हैं. So हमने we ask multiple question, delivery experience क्या है? So we generally see a similar line. So हम brand satisfaction ही पूछते हैं. But you Abhishek, can ask both. Sorry, Abhishek, I had a question regarding reviews, because that's something that we found to be very difficult to, incentivize our customers to keep coming back and leaving that. And it's like a chicken and egg problem, right? एक नया customer आता है, वो product देखता है, बोलता है यार ठीक है, product अच्छा लगा, website सब ठीक लगा, experience सब बढ़िया है, but यार reviews बहुत कम है. So should not buy, right? Or obviously, like on your own website also, you can build up a lot of fake reviews, but that's not the way forward. It's not sustainable, so we don't do that. And on marketplaces like Amazon, right, and others, it becomes very difficult to get a review, right? So what's your take on it? Because most of the algorithms work on reviews, like more the reviews you have, better your product listing happens on the page. So how did you guys manage getting genuine reviews from the customers? Right. So from day one, we were very close to the customers. So I still remember जब हमारे I think our top 100 order करते थे हम website से, we used to call each and every customer. What's your experience? What's your delivery experience, product experience? क्या आपको जैसे Amazon का number तो होता नहीं था हमारे पास, but we used to call each and every D2C customers. We asked them to how's experience. उसको हम fulfill भी करते थे, because initially problems were not just in terms of delivery, but it also in terms of, frankly speaking, packaging of product में भी issue आ जाते थे कई बार, because we were new. Maybe some of the batches packaging has some issue. We started shrink wrapping the product, especially the जहाँ पे liquid attached है हमारे पास. So we started working on the website as well, website experience and everything. So after talking to the customer, we asked them, sir, if you can give a review to us on our website, on our Facebook, on Google. After a particular point of time, people started taking us seriously, and वो review देना शुरू करा. Review बहुत detail आने लगे. The founder called me directly. This is such a great brand. I used on my baby. It's much experience and everything. So talking to the consumer is one of our forte. Currently as well, we have built a tool in house where we talk to our consumers. जो हमारे new launches होते हैं, the strategy part as well. What should be launched? What should not be launched? What changes need to be done into the existing pipelines, and everything. We take a feedback from the consumer and then we do. So we have an internal feedbacks tool on the website. We choose when to show, when not to show, and what question to ask to the consumer. So वो connect बनाना काफी important है, and we need to make sure that we are building those connect to the consumer. Secondly, you can also run a CRM campaigns. Generally, suppose heads of hotels, they generally run a I think 100 rupees or 200 rupees cashback discount when you place a review. You need to place a review, share a screenshot to them, and they will credit that cashback into your account. So those are sort of funnel you can also run as well. So these are things we tried in the past, and we have got a good feedback. Also, we do a couple of samplings as well in the past. हम sample करते थे, we ask customer to talk about it into the various platforms, and people were happy to do that. So those are things we did in past. The sampling and these activities will work for you, I guess. Thank you so much. Right. Let's move to the next part. So the second part is more about the customer education and bonding, which is the more of an engagement phase.
So I will not go deep into the theory of this. I will go more into the examples कि कैसे हम execute कर सकते हैं, क्या growth hacks use कर सकते हैं, हमने क्या use किए थे जब हम past में when we were executing this part. Okay. So frankly speaking, customer education and bonding पहले भी हो जाता है when you are acquiring the customer. It depends on the brand to brand. If you're a high ticket size brand and mostly a one time use, तो जनरली आपका एजुकेशन पहले हो जाता है कस्टमर का एंड बॉन्ड भी वो पहले क्रिएट हो जाता है बिकॉज उसके बिना कस्टमर एक्वायर नहीं होता. बट फॉर लो टिकट साइज, जनरली फॉर लो टिकट साइज ट्रांजेक्शंस, the bond will be created after first acquisition because उसके बाद you have a connect for the customer. We generally educate the customer. We generally work on what the brand is all about. So for us, we generally talk about more onto the functional benefit by acquiring the customer. Then we make sure that what are the brand values, why we stand for. We talk about plant goodness. We talk about plastic positive. Every initiative which we have taken. And that sort of bond we try to establish after acquiring the customer, because we know that in terms of acquisition, either we can create a bond or educate the customer, or even we can acquire the customer. So from maximum of the our performance mediums, we try to acquire the customers and then we shift for educating the customers. And wo cheaper medium bhi hota hai because you have the connect to the consumer. You can directly educate the customer via various mediums of CRM, paid as well. Okay. So पहला फेज पे आते हैं हम इंक्रीजिंग यूजर एंगेजमेंट पे. ओके, सो उसमें आता है कि यू नीड टू फर्स्ट वर्क अपॉन व्हाट योर कंज्यूमर्स आर डूइंग ऑन योर वेबसाइट, ऐप एक्सेट्रा. ओके, फ्रॉम विच पेज दे आर गोइंग टू व्हाट पेज. सो दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ हॉटजार एंड गूगल एनालिटिक्स. गूगल एनालिटिक्स पे आता है कि इफ अ कस्टमर इज कमिंग टू अ होम पेज, डायरेक्टली लैंडिंग ऑन अ पेज, होम पेज, what is the second thing he is doing? For us, the customers are doing directly a search. So सबसे पहले वो search पे जाते हैं, search करते हैं कोई भी product. तो so for us, search is one of the mediums जहाँ पे हमें focus करना चाहिए, right? So ऐसी second है product, checkout, category sections, etc. Right? So we should know what the customers are doing on your website, from which page they are going to what is the next page. Accordingly, you should also define what is your desired next page. Maybe a customer is going to about us, maybe some other section. उसको हम deprioritize कैसे कर सकते हैं, या फिर उसको हम visibility कैसे कम करें? What should be the ideal customer flow and what is the current customer flow, and how you should make sure that your maximum of the customers are coming to the current your ideal customer flow. So उसके लिए हम changes कैसे करें, और छोटे-छोटे UI changes हैं जो हम कर सकते हैं. So this is one of the example we did. You can see that ये हॉटजार है, कस्टमर कहाँ पे क्लिक कर रहा है. तो you can see that कि ऊपर सेक्शन पे जो हमारा लास्ट विजिट था, let me show again. So you can see यहाँ पे सबसे ज्यादा क्लिक यहाँ पे हो रहे हैं एक कलर के सेक्शन पे, बट वो प्लेस 5th पे है. अब कस्टमर का साइकोलॉजी क्या होता है कि वो लेफ्ट से राइट जाएगा और फिर टॉप से बॉटम जाएगा. तो अवर फर्स्ट थिंग इज कलर केयर को कैसे आगे लेके आए. इफ यू सी ऑन आवर वेबसाइट, कलर केयर इज ऑन द फर्स्ट पार्ट. ये स्मॉल चेंजेस जो हमें करने होते हैं, बिकॉज दीज स्मॉल चेंजेस क्रिएट अ इम्पैक्ट इन द फ्यूचर, राइट. सो दीज ऑल थिंग्स वी ट्राई टू एनालाइज फ्रॉम द कस्टमर वीडियोस. एक कस्टमर वीडियो है, we have a dedicated we have a dedicated team जो वेबसाइट कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन पे वर्क करती है. एंड दीज टीम्स चेक कि कलर केयर पे हम कहाँ पे क्लिक हो रहा है, कहाँ पे वेबसाइट पे बाकी जगह क्लिक हो रहा है, एंड हाउ वी कैन ऑप्टिमाइज इट. What should be the first banner, what should be the second banner, what should be the first product, what should be the second product, how we can, with the aim of optimizing the customer engagement and increasing the revenue. Okay, so these are the small things, and but the value add is really high. तो 80-20 रूल है यहाँ पे भी. इनिशियल 20% एफर्ट से 80% रिजल्ट आपको दिखने शुरू हो जाएंगे. Okay, so these are things we started doing and we have seen a good amount of results. Our conversion rate is also high for the website due to such things we are trying to do on a regular basis. Okay, second, अब आता है यहाँ पे कि we started doing test as well. Test in terms of if you are showing some maybe communication onto the home page, whether this communication is working well for me or a Y communication is working well for me. Okay, similarly onto our whole email communication, WhatsApp communication, which type of communication is working better for me. Okay, तो उसके लिए A/B test करना काफी important होता है. So we generally try to do 5 to 6 A/B tests on a monthly level.
सो ये मंथली लेवल पे हम डिवाइड कर देते हैं. व्हाट इज द ओरिजिनल जो currently existing flow है, what is the new flow, and what is the uptake into the conversion rate or uptake into the performance of the communication. So we can see that the probability of the variant is higher from the original one. So we started switching to the variant one, that this communication is working well for me. So you should do these communication tests both on your website as well as into the communication you are sending via CRM. ओके, ईमेल में भी आपको टेस्ट करना चाहिए कि सब्जेक्ट लाइन क्या है. वहां पे भी हम ये कंट्रोल टेस्टिंग कर सकते हैं. कुछ लोगों को सेंड करा, कुछ लोगों को सेंड नहीं करा, एंड वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दीस टेस्ट. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज these small things create an impact in the future कि overall funnel कैसे optimize हो रही है. Okay. Next is after trying these activities you realize कि यार ये लोग तो convert नहीं हो रहे हैं. Maybe customer installed the app or maybe visited the website, but 7 days तक कोई परचेज नहीं करा. Add to cart कर दिया, but the customers are not purchasing from you. Maybe payment failed हो गया, but the customer is still not purchasing from you. And we are also send the communication to those customers. So first start करते हैं कि payment failed से. अब payment failed में तो बहुत ज़्यादा intent था, but फिर भी वो चला गया. I think ideal success rate जो होती है 85 के above होती है, but generally in e-commerce industry startup world में 70 तक भी payment success rate रहती है, which is not good, but you need to work on where the things are going wrong. There are two type technical issues as well as intent issue. Generally 15% जो इस 30% जो payment success इसका drop है, 15% half of the people intent issue होते हैं, 15% होते हैं कि there is actually में some issue with the payment gateway. Maybe सबसे ज़्यादा UPI में issue आते हैं because it fluctuates a lot, payment is not that smooth. So what you can do, rather than just only trying email, SMS push, you should work on the other channels as well. So WhatsApp I think recently काफी prominent हो गया है. Apart from that, working on the affiliate channels, Google, Facebook as well. Why you need to focus more, acquire these customer or maybe retain these customers via the channels? Because अगर वो आपके CRM से नहीं आ रहा, you are losing those customers. Cost of getting that additional order will be as same as your new order अगर आप उसको चैनल से एक्वायर नहीं करते. बिकॉज अगर आपको एक ऑर्डर चाहिए फेसबुक से शायद मैं वो रीमार्केटिंग की फनल ऑन कर दूंगा, वो शायद मुझे 200 रुपीज में ऑर्डर आ जाएगा. बट इफ आई एम प्लेसिंग एन ऑर्डर अ न्यू कस्टमर, ब्रिंगिंग अ न्यू कस्टमर, मे बी वो 800, 900, 1000, 2000 का भी ऑर्डर आ सकता है. सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू बिल्ड अ वाटरफॉल इंटरनली. When should I send my email, SMS, push, WhatsApp? WhatsApp मैंने इसलिए second रखा है because it's a not that cheaper medium as compared to email, SMS and push. Push notifications are जो browser push and everything जो आते हैं Android में काफी prominent है. Then the affiliate marketing, you can talk to affiliate partners as well जो campaigns run करते हैं. Then Google is a much cheaper medium as compared to Facebook, and lastly the Facebook as a the most expensive medium. So this is the sort of a waterfall you can make कि ये जो मेरे high intent customer थे जो मैं lose कर रहा हूँ, how we can bring them back. Okay, so this will be as good as a new customer, but with a much cheaper cost if we acquire by these mediums. Okay. Similarly, we need to make sure that engagement के लिए you personalize the experience, maybe by some asking the birth date, asking gender, asking कि what is your interest area you have. So this is a classic example कि जो heads of hotels करता है. heads of hotels का मैं काफी अच्छा फैन हूँ, काफी बड़ा फैन हूँ. I am a pet parent as well. So वो आपका pet का birthday पूछते हैं, उसका नाम पूछते हैं, and a birthday month they generally send a campaigns. It's a birthday month for your pet or your pet child. You should buy this, or this is a sort of a customized gift you should buy. And as a pet parent, I generally end up buying those things कि यार अच्छा okay ये भी अच्छा है, ये भी कर सकते हैं. And वो personalized communication भी कर देते हैं कि okay for my pet name is Benji, so for Benji we recommend these things. Okay, winter is coming, we recommend maybe a new bed for him or such things. So you can personalize the customer communication depending on what sort of information you have. To get that these information, you need to ask the consumer. I will cover that कि वो कस्टमर के कैसे कवर करते हैं, कि कैसे कब पूछना चाहिए कस्टमर से कि चीजें, but you need to make sure you ask customer about these things. Birth date हो गया, gender हो गया, और भी things required for your business you should ask. Family में कौन कौन है,
and everything. So you can make sure you personalize your journey accordingly. Second is you can also brand occasions as well, like birthday aa raha hai brand ka, maybe you are launching some initiative, everything you should share with the consumers. अब उससे obvious है sale increase होती है. And finally, but the brand connect is also increased. Okay, 2 साल में हमने ये करा. If you see, this thing is generally done by spinning. हम काफी करते थे. What is our journey? हमने 3 साल में क्या हुआ? Thank you for a part of being a spinny journey. Here's a small incentive for you for being an early customer, etc. And वो customer promote भी करते थे. लोगों से word of mouth से बात भी करते थे. And we get to know from when we started calling consumers. Okay, when you, how do you know about us? Then they tell us, a friend told me that it's your second birthday and these all things are happening. What all things you have done in the past as well. We also make sure that we attach some social cause as well, या फिर talkability thing कि जैसे वो बात कर सकते हैं अपने friend या family से. So हमारे लिए वो social cause या फिर जो जिससे plant goodness हमारे लिए काफी engagement medium भी होता है consumer के लिए कि we plant tree with each and every order. So people talk about this to their friends and family, and that's how the whole engagement journey is building. Okay, and finally though, जो I think order tracking, feedback journey, surprise gifts में बहुत अच्छा काम करता है, Cred करता है. I think last 2 years में Cred had sent me 2 to 3 surprise gifts. 2 surprise gifts थे जो generally Cred का birthday था and everything they sent me. Lastly, last month my order was cancelled because they were not able to fulfill the order. They sent me another gift to compensate. Okay, we are really sorry, your order has been cancelled. Here's a small gift from you. Surprise gift में you can also send surprise gift in the current order as well, which I think Nykaa is doing really well. जो minis and freebies send करते हैं. It may be as a sampling activity, but for the other brands, and they're charging for that. But you can also send your products as well, maybe to upscale or maybe to upsell the customer to a newer products as well. So surprise gifts works really well as well for us as well, especially when you are in a multi-category space. एक category है तो थोड़ा difficult होता है, but multi-category है. So for us, if a customer is buying a hair product, we generally send him a face product or maybe a color hair product, depending on what type of consumer he is. Okay. Success KPI क्या होने चाहिए engagement के? So first is the conversion rate of the website. If your website is really good, your app is really good, your conversion rate should be high, should be good. Okay, and this is the first and foremost metric. So website में आप जो engagement activity कर रहे हो, उससे भी conversion rate high होनी चाहिए. This also depends on what sort of content you are keeping on your website, what sort of engagement activity you are doing. Second is daily active user, DAO, MAU, WOW, and weekly active user, monthly active user, how frequently the consumer are coming to your website. It depends on category to category as well. If you're a subscription plan, then your DAO to MAU ratio is really healthy. If you're not a subscription plan, you're a personal care brand, people might come on a maybe on a quarterly, monthly level, but you need to make sure how you can increase that. Maybe customers bought the product, how to use आपकी website पे आना चाहिए. Maybe upselling के लिए आपकी website पे कि okay, I might have bought a serum, niacinamide serum. How should be used? Best effective कैसे होगा? कब use करना चाहिए? आपसे बात करने के लिए आना चाहिए. Maybe talking about the reviews, etc. The customer should come to your website, etc. So those connect need to be there. It should not be like if you are sending a WhatsApp coach, it should not be all about place an order, place an order, place an order. It should be about engagement. It should be about what why you exist. Brand क्या कर रही है आपके लिए. So brand connect बनाना बहुत important है. It also depends on कि brand story क्या है. So brand story बनाने के लिए you also need to decide कि where do you exist, what sort of brand sentiments you have, and किस TG को target कर रहे हो. Each and every TG will not resonate with the social cause. It might resonate with some other cause. Okay. Then is the session duration, page per session. What is the percentage of new and returning visitors? These are some of the matrices. Depending on your business, the matrices can be increased or matrices can be modified. But these will cover 80% of the total things we have available to measure as a category. Okay. Cool. I think let me take the questions if you guys have any. Yes, I can see a couple of questions. Can you recommend some agencies we can work with to improve customer experience on our website?
Okay, I will get back with a couple of agency. If you can also share what type of tech stack you are working upon, I can share. I think most of you are on Shopify, so I will recommend a couple of agencies accordingly. Any other questions? Anyone you have? You can unmute and maybe raise the question. Can you please share some of the benchmark for session duration, pages per session, etc.? It totally depends on what type of business you are working upon. So as I've said, for subscription business, DAO to MAU ratio goes as high as 25, 30, 50, etc. For a brand like us, it generally varies from 8 to 14. Okay, so it totally depends on what type of mix you have for new and returning customer, whatever channel mix you have. So इतना idle नहीं है कि ये session mix होना चाहिए. It mostly on if you are increasing sub session mix or something. अब session duration 1 minute नहीं होना चाहिए. Ideally, suppose if a customer is coming to your website to judge whether a customer should buy a product, at least he should take or she should take at least 2 minutes to 3 minutes. तो इतना होना चाहिए session duration. If a session duration is less than 1 minute, it's more of a bad quality traffic to come into the website, or there is some issue with the tech you might be facing. Okay. Okay. For WooCommerce as well, you can recommend. Okay, I will try to get. There's one of the partners I used to work. He's a great guy. He's also working for us for a project for the international market. I will recommend. When do you feel that a brand should go for an app, have app for the website? Okay. So, अगर app की journey देखते हैं, so initially people don't used to make apps because phone sizes were limited. Hardly 8 GB आता था, 12 GB, 16 GB, and people and customer used to, or maybe the consumer used to uninstall the apps and then install another app. Photo delete करते सब कुछ करते थे. But currently, especially in Android or in iOS as well, आजकल 128 standard हो गया है. iOS में तो और भी ज़्यादा है. And there are expandable memories, cloud memories as well. So वो problem एक काफी कम हो गई है. So one of the problems of not having an app has been reduced, but also you need to make sure to have a right use case for the app. So it depends on the business. Subscription business must have an app. उसमें तो कोई doubt ही नहीं है. If your DAO to MAU ratio, if the customers are for your business, it is required that customers should come to a website much more frequently, and they should engage. You have a cross category as well. You should have an app. Okay. App as a business reaching out to consumer is really easy because आप वहाँ पे push notification extra use कर सकते हो. Readability of push notification, जो app push notification really high, in-app notifications are really high, and you have a much better acquisition models as compared to web in-app. क्योंकि यहाँ पे tracking better होती है. So analyze your business, see couple of things. What is the product market fit? What is the idle time of a repurchase? How many times a customer should come or to buy from me? Okay, and उसके लिए what all things you should and depending on those you should define कि app होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए. Secondly, maybe हो सकता है कि for acquisition as well you need an app. Okay, for a Spinny as a business, we realized that app बहुत important है because the buying a car took a customer around at least 2 to 4 weeks because वो choose कर रहा है, देख रहा है ना, ऐप में उसका experience बहुत better हो जाता है. वो save कर लेता है अपने wish list में, उसके बाद दोबारा आधा check कर लेता है. So it totally depends on business कि आपका business किस तरह से run हो रहा है, business किस तरह की requirement क्या है, and accordingly you need to work upon. Okay, so ऐसा भी हो सकता है कि less acquisition business have an app as well, but their in acquisition for the DAO to MAU ratio is really high. So DAO to MAU ratio is a ideal metrics to judge. You can directly look for a DAO to MAU ratio in your Google Analytics dashboard. वहाँ पे वो मिल जाता है easily. Agency versus NI, if you have any insight on what should you make the transition and priority areas. It totally depends on what sort of type of business you want to make. Okay, for us, frankly speaking, since from day one we were really clear that we want to make house of brands, house of D2C brands. So we want to make sure that each and everything should be in house. We need to hire experts. We need to build a team of experts in house. That's why we try to do things in house, especially in terms of performance as well as retention marketing. But in terms of other things are concerned, like maybe CRO activities,
conversion rate optimization, etc. You can hire an expert for a project, etc. Maybe to do some of the activities. Then make sure the things are coming in house, because market में जो experts available हैं, the price cost is quite high, and we might not able to afford them. CRO थोड़ा महंगा है market में. Agencies for retention and acquisition तो फिर भी easily available है. Our product LTV is 6 to 8 months. How can we get repeat purchases? It totally depends on the your segment. I'm not sure about what type of business you are in. You can drop me a personal email. We can discuss over a call or maybe on a chat, or we can discuss more about your brand, and then we can work upon how we can increase the repeat purchases. Okay. Any other questions? Let me jump to the next section. तो कस्टमर कमिटमेंट, अब हमने एंगेज कर लिया कस्टमर को, हमने काफी कुछ बीच में फनल भी कर लिया, उससे सेकंड ऑर्डर आ भी सकता है, बट कस्टमर कमिटमेंट लेके आना है. एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, दिस कस्टमर कमिटमेंट सेकंड ऑर्डर एक हमारा ग्रोथ हैक है कि हमें सेकंड ऑर्डर पे हम बोलेंगे कस्टमर कमिट हो गया हमसे. इट माइट नॉट बी एप्लीकेबल फॉर अदर ब्रांड्स एज वेल. ओके, सो सेकंड ऑर्डर हमने डिफाइन करा है, राइट. सो डिपेंडिंग ऑन योर ब्रांड यू कैन चूज कि वो क्या कमिटमेंट स्टेज होना चाहिए कस्टमर को. मे बी अ फॉर्म फिल्ड हो सकता है आपका, आपने एक लॉयल्टी प्रोग्राम बनाया है, लॉयल्टी प्रोग्राम में एनरोल कर लिया तो कमिटमेंट हो सकता है आपका, राइट. गुड. सो नाउ कमिंग टू द कस्टमर कमिटमेंट पार्ट, तो उसमें सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है हाउ वी कैन रिड्यूस द चर्न फ्रॉम द वेबसाइट. तो इसमें हम थोड़ा सीआरओ वाला पार्ट और ऑप्टिमाइज करेंगे, हाउ वी कैन इंप्रूव द कन्वर्जन रेट बाय सीआरएम. तो पहले तो हम फनल प्लॉट करते हैं. If a customer is coming, so this is one of the funnel, item added to the cart, but उसने order complete नहीं करा. Okay, तो first हो गया, उसको flow में add करते हैं. First to 3 hours में हम कुछ communication send करने का plan करते हैं. Okay, अगर customer फिर भी नहीं आया, then again send a abandoned cart communication. अब नहीं आता, फिर second और third में हम और communication send करने का try करते हैं. These type of funnels, and you can not just include emails, you can include WhatsApp, you can include SMS, or maybe anything. बट आपके पास कंसेंट होना चाहिए. जनरली कार्ट के टाइम पे वो फोन नंबर या पुश नोटिफिकेशन या ईमेल ही होते हैं, या फिर जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन. लॉकडाउन है तो काफी इन्फॉर्मेशन होगा, बट बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी. सो यू नीड टू मेक श्योर दैट you are utilizing those journey to send the communication. You need to make those journey and customize according to customer कहाँ पे drop हो रहा है. Okay, तो first part is this. Second, अगर हम आते हैं कि हाँ, सो अब उसमें हम डिस्काउंट लेटर क्रिएट कर सकते हैं. तो फर्स्ट स्टेज पे हम बोल सकते हैं यार 10% डिस्काउंट आपको मिल रहा है. सो it's more onto the lines of if a customer is price sensitive. The reason of dropping a customer is price, not a brand. Okay, so you need to make sure that if a customer is dropping the cart, why the customer is dropping. वो प्राइस की वजह से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है. अगर प्राइस की वजह से होता है तो डिस्काउंट लेटर वर्क्स रियली वेल फॉर द कंज्यूमर्स. सो दिस इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड डिस्काउंट लेटर. डे 0 पे आप 10% डिस्काउंट दो, फिर 15, फिर 20, 30 एक्सेट्रा. ये आप इंक्रीज भी कर सकते हो, चेंजेस भी कर सकते हो, बट दिस इज अ टाइप ऑफ अ डिस्काउंट मॉडल यू गाइस कैन रन ऑन टू द वेबसाइट. अब इसमें एक और चीज आती है यार, डिस्काउंट कब तक रन करते रहेंगे. एंड डिस्काउंट रन करना इज ओनली थिंग, या फिर व्हाट ऑल थिंग्स यू कैन रन, हाउ वी शुड डिसाइड द ऑफर. सो how we optimize things are, we play on the perceived value of the offer. We generally don't give discounts beyond a particular level. We worked on the perceived value, maybe giving a small product free, travel pack free. We generally give cashbacks as well. So maybe a particular set of customers have a more affinity towards a free product, other customer has a more affinity towards a flat discount. Maybe some customers have affinity towards a cashback. So depending on that, we are working with the consumers कि कौन सा discount हमें या फिर कौन सा offer हमें place करना चाहिए at what point of time. What we have also done is from the past data we have also analyzed कि यार किस type of customer पे क्या discount work करता है. So we know that for our new consumers, the flat discounts work really well. For our repeat consumers, cashback works really well, or a free product works because they know कि Mamaearth है, they want to use other products as well. कोई free product आता है, generally they buy. So we try to do customer segmentation. So abandoned cart में हमने 3-4 sections बना दिए, and for each segmentation we try to upsell according to the offer, according to the customer की segment क्या, उसके according हम offer plan करने लग गए. And the offer generally increases, or perceived value of the offer generally increases
with the number of day he has added to the cart or not purchased from us. Okay, this is a standard model, and I would strongly recommend. I think at least 20 to 30% increase आपका आ जाएगा using these communication if you are not using. We have seen in Mamaearth as well. We implemented this in 2000, I think 2019 Jan or 18. जब हमने पहली बार इम्प्लीमेंट किए थे सारी चीजें, ये हमने मैनुअली इम्प्लीमेंट किया था बिकॉज टूल नहीं था अवेलेबल, टेक भी नहीं था हमारे पास इतना अवेलेबल. वी स्टार्टेड सीइंग कि 30 to 40% कंज्यूमर यहाँ से आने शुरू हो गए बिकॉज देवर अ लॉट ऑफ कंज्यूमर्स जो कहीं और से शायद तो परचेज कर रहे थे या फिर कुछ और रीजन था उसको ड्रॉप होने का. देन वी स्टार्टेड एनालाइजिंग कि वो क्यों ड्रॉप हो रहे हैं एंड देन वी वर्कड ऑन द अदर जर्नीज एज वेल. You can also create back in stock journeys as well. Okay, you might have purchased a shampoo in the past. This is a new launch, or maybe you can refill with a larger pack. Or here is a quick offer for you applicable for next 2 hours or 3 hours, and directly. Generally, offers generally उस particular audience के लिए बहुत अच्छे work करते हैं because they have a strong affinity towards product already use कर चुके हैं, and then they want to restock, they can again buy. So personalized communication आप कर सकते हैं. Price drop campaign आप कर सकते हैं directly कि okay for next 2 hours जो I think Amazon पे काफी lightning deal जिसको बोलते हैं, for next 2 hours the price is slashed by 20%. Hurry, buy soon. So जो generally कस्टमर बाइंग बिहेवियर वो काफी चेंज हो जाता है एंड दे जो प्राइस का जो मोटिव होता है वो मीट होते ही कस्टमर जनरली बाय फ्रॉम. सो दीज आर स्मॉल स्मॉल नजेस यू शुड इम्प्लीमेंट. ओके, इससे ऑर्डर प्लेस करना काफी इजी हो जाता है आफ्टर एंगेजमेंट फेज. राइट. एंड सेकंड आता है कि अब हम क्रॉस सेल भी कर सकते हैं. अब क्रॉस सेल थोड़ा मुश्किल होता है right, because वो न्यू ब्रांड कैटेगरी इंट्रोड्यूस करना है, क्रॉस कैटेगरी इंटरवेंशंस क्या हैं. सो व्हाट वी स्टार्टेड डूइंग वाज वी स्टार्टेड एनालाइजिंग आवर डेटा. If a customer has purchased a shampoo for us, what is the probability that he will purchase maybe a same category product, cross category product, or maybe something else, या फिर same product purchase करेगा, and वो किस interval में purchase करता है. So what we have seen is कि जैसे ही कस्टमर परचेज करता है विद इन अ वीक वो क्रॉस कैटेगरी प्रोडक्ट परचेज कर लेता है हमसे rather than सेम कैटेगरी प्रोडक्ट. वो थोड़ा सा हमारे लिए इंसाइटफुल था कि ओके दिस इज ग्रेट न्यूज. देन वी स्टार्टेड targeting or planning the strategies accordingly. Also what you can do is if a customer has purchased a shampoo and an oil, you can say कि यार इसका complementary product है, I think कंडीशनर आप यूज कर सकते हो, मे बी आप शैम्पू के साथ ऑयलिंग करके करोगे तो बहुत बेटर यूज होगा. कस्टमर स्टार्टेड परचेसिंग दोज एज वेल. तो आप जनरली क्या करोगे, अपसेल करके ओवरऑल ट्रांजैक्शन वैल्यू फ्रॉम दैट कस्टमर इंक्रीज करा लोगे. यू कैन डू दैट ऑन टू योर कार्ट एज वेल, यू कैन डू दैट ऑन योर CRM communications as well. Okay, few of the brands currently started using कि वो IVR calling या फिर IVR calling के बाद वो डायरेक्टली असाइन कर देते हैं लोग कि okay we are a personalized we will help you choose your regime or build your regime. Let me know what problem you have. Okay, you can purchase an X amount of products, these many products as well, rather than just buying one of the products. For your skin treatment this is also really good. तो वो वाली funnels भी हम introduce कर सकते हैं, but I would not recommend कि वो इतनी scalable नहीं होती calling funnel etc. So better होता है कि work on the CRM funnels. अगर उस पे work कर लेते हैं, these are scalable to a much larger extent. Similarly, push offers from the affiliate partners कि CRM के अलावा हम बाकी जगह से कैसे प्रमोट कर सकते हैं, because वहां से पुश करना इजी होता है. If a brand is only sending communication, customers को थोड़ा perceive होता है कि यार ये काफी pushy है, and people they might ignore the communication from the same brand. If a communication is coming from some other place, they might able to perceive more and they might able to okay कि actually ऑफर देख लेते हैं, then if you can purchase, because आपके वहां से फटीग आ सकता है. If you're sending a regular communication, आप WhatsApp रेगुलर भेजते हो, customer might ignore your WhatsApp, directly वो spam कर देगा या फिर ignore कर देगा, open नहीं करेगा. That's how the email open rate down हो जाती है कुछ टाइम के बाद. So you need to make sure that you utilize your other channels as well to promote your communications. And जो मैंने I think पहले बोला था, analyze your segments. टॉप कैटेगरीज क्या है, अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरीज क्या है, अंडर परफॉर्मिंग पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे सकता हूँ क्या, जहां मेरी ग्रॉस मार्जिन ज्यादा है जहां पे थोड़ा अंडर कट कर सकता हूँ क्या. सो व्हाट आर स्ट्रेटजीज यू वांट टू डू, पर्टिकुलर सीजनैलिटी के बेसिस पे हम क्या कैटेगरी कर सकते हैं. सो फॉर अस विंटर में इफ वी स्टार्टेड सेलिंग लोशन, अब लोशन में अगर मैं स्टार्टिंग में ही इफ आई गिव अ ऑफर ऑफ बाय वन गेट वन,
तो मेरे लिए बहुत बेटर होगा एज कम्पेयर टू कि एंड ऑफ द सीजन में। तो बिकॉज जनरली एक फैमिली में 400 to 800 ml अ फैमिली ऑफ 3 to 4 इतना यूज होता है एक सीजन में लोशन। तो वो कैसे लोशन का मेक श्योर कर सकते हैं कि हमारा ही लोशन यूज हो rather than someone else. So analyzing those data, both market trends, both our category trends, analyzing the past data to make sure you combine those journeys कि वो किस तरह कब communication plan करने हैं. Okay. Okay. So एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Could you please reliable affiliate partners? Frankly speaking, इंडिया में there are partners who जो 100% reliable नहीं होते. कोई भी पार्टनर reliable नहीं होता. So we need to understand the affiliate industry work कैसे करती है. So these affiliate partners are a sort of a marketplace of a number of publishers, and they generally have a dashboard internally. वो क्या करते हैं, publish कर देते हैं offer कि maybe Mamaearth is providing this much offer on these many products, this much offer on these many products, और ये link use करके you can promote the offer, and अगर if you get maybe if your customer is placing an order, you will get this much amount of money or maybe earn this much amount of money. अब एफिलिएट के हाथ में भी इतना कंट्रोल नहीं होता कि जेन्युइन एफिलिएट पार्टनर लेके आ पाए. ओके, सो यू नीड टू मेक श्योर बैलेंस एंड चेक्स आर प्लेस एट योर एंड. ओके, सो सबसे पहला बैलेंस चेक होता है कुछ फ्रॉड मीडियम से यूज नहीं कर रहे हैं, ब्रांड बिडिंग तो नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आपके ब्रांड पे बिड करके आपको सामान सेल कर सकते हैं, आपको बस यूटीएम पैरामीटर चेंज करने होते हैं. सो दीज ऑल थिंग्स नीड टू बी प्लेस्ड. वो आपको खुद को करना पड़ेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर नथिंग व्हिच देयर आर नो जेन्युइन एफिलिएट पार्टनर्स. ईच एंड एवरी एफिलिएट पार्टनर्स हैव अ नंबर ऑफ पब्लिशर्स. उनमें से कोई पब्लिशर कुछ भी कर सकता है एंड उस पे कोई कंट्रोल नहीं होता मैक्सिमम एफिलिएट पार्टनर्स का भी. सो यू नीड टू मेक श्योर द चेक्स आर एट योर एंड. Okay, if the checks are at your end in place, then you can start working with these partners. How to segment your customer base? Because I think हमने काफी इस पे समझा कि क्रॉस सेल के लिए एक पर्टिकुलर कैटेगरी है. फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉस सेल कैटेगरी यू नीड टू वर्क अपॉन कि फॉर डिफरेंट सेगमेंट टू सेंड डिफरेंट कम्युनिकेशन. सिमिलरली हमने एड टू कार्ट अबंडन कार्ट में भी we analyze कि for different set of consumers the different type of offers working really well. So the question is how to segment your customer base. किस अब segment को क्या strategy होनी चाहिए, what should be the ideal mix of segmentation etc. right? So this is one of the techniques which we use and most of the brands generally use. So recency RFM modeling होती है, recency frequency monitoring. कितना रिसेंटली कस्टमर ने परचेज करा हमसे, कितना फ्रीक्वेंटली वो हमसे परचेज करता है और किस मॉनेटरी साइज का वो हमसे परचेज करता है. राइट, तो इसमें आप दो चीज भी ले सकते हो, तीन चीज भी ले सकते हो. तो बट हम जनरली हम रिसेंसी एंड फ्रीक्वेंसी लेते हैं बिकॉज इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी साइज वी नो दैट हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू फॉर डिफरेंट कोड्स इज नियरली द सेम. तो मॉनेटरी ग्रोन कर देते हैं, हम रिसेंसी और फ्रीक्वेंसी पे वर्क करते हैं. अब इसको समझते हैं बना कैसे. सो अब रिसेंसी 5 का मतलब है कि बहुत रीसेंट कस्टमर है, राइट, एंड फ्रीक्वेंसी 5 है तो बहुत लॉयल कस्टमर है. अब इस न्यू कस्टमर का मतलब है कि फ्रीक्वेंटली तो वो नहीं है बिकॉज एक बार ही परचेज करा है, और रिसेंटली आया तो न्यू कस्टमर हो गया. अब वो थोड़ा रिसेंट नहीं है, थोड़ा सा उसने पहले परचेज किया था, मे बी 1 मंथ डाउन द लाइन, 1 मंथ पहले उसने परचेज किया, बट वो एक ही परचेज करा तो वो रिसेंट कस्टमर है. जिस कस्टमर ने आई थिंक 2 महीने पहले परचेज किया था बट एक ही करा है, वो हेजिटेट कर रहा है, दोबारा परचेज नहीं कर पा रहा है. और लास्ट को 3-4 महीने पहले परचेज किया तो ऑलमोस्ट लॉस्ट है या फिर वो लॉस्ट होने वाला है. राइट, तो इस टाइप से हम कस्टमर की प्रोडक्ट की सेगमेंटेशन करते हैं. कुछ हमारे टॉप कस्टमर्स हैं, रेगुलरली हमसे परचेज करते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी भी काफी अच्छी है. राइट, ये हॉट प्रोस्पेक्ट है जो हमसे रिसेंटली हमने परचेज करा है बट उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई नहीं है, फ्रीक्वेंसी हमें इंक्रीज करने की और जरूरत है. राइट, एंड ये हैवी बायर्स हैं जो हमसे काफी फ्रीक्वेंटली लेते हैं बट रिसेंटली नहीं लिया है. सो ये टॉप कस्टमर में कन्वर्ट हो सकते हैं इफ यू ट्राई टू सेंड देम कम्युनिकेशन. ये लॉस्ट हैवी बायर्स हैं, ये आपके बहुत अच्छे लोग थे बट ड्यू टू सम थिंग्स मे बी आपका एक्सपीरियंस कुछ खराब हुआ, कोई प्रोडक्ट क्वालिटी में खराब हुआ. जनरली क्या होता है, कुछ बैच में क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज गुड, कभी कुछ बैच में चेंजेस आ जाते हैं. तो मे बी उस वजह से कस्टमर्स काफी फ्रीक्वेंटली करता था बट रिसेंटली उसने बाय नहीं करा. यू नीड टू टॉक टू दीज कस्टमर स्पेशली एंड मेक श्योर वो वापस आए. सेम ऐसे ही चर्न हो गए कस्टमर जो हमसे फ्रीक्वेंटली बाय करते हैं, रिसेंटली भी नहीं है, तो वो उसको कैसे हम कर सकते हैं. सो फॉर ईच एंड एवरी ऑफ दीज कस्टमर सेगमेंटेशन, सो डिपेंडिंग ऑन योर कस्टमर साइज एज वेल, यू नीड टू मेक श्योर कितने बकेट में डालना है. फॉर
initially we used to define only 3 buckets: new customers, recent customers, as well as dormant customer. 3 bucket थी. धीरे धीरे हमने divide करना शुरू करा. Okay, these are the VIP customers. These are the customers who are heavy customers but lost. So हमने उसको 7 segments में divide कर दिया currently. So in different segment customer, different type of a communication strategy हमने define करी, और maybe हमारे जो buying pattern है उसके accordingly क्या strategies होनी चाहिए in terms of offer etc. So the next question is, I think, what should be the targeting strategy for each segment? I think if you can spare 5 minutes and think about it, write your answers in chat. कि क्या strategies होनी चाहिए, especially for these 4 segments: top customers, new customers, जो customer hesitate कर रहे हैं, and lost heavy buyers. So that depending on your answers, I can also get the feedback, as well as we can discuss कि हमें क्या strategies define करनी चाहिए. Quickly, 5 minutes. Are we in? Yeah, cool. Everyone's clear on the question. So just decide the targeting strategy for the 5 segments which have been highlighted on the sheet. So how would you, what message, or what type of message would you want to send to these customers to get them back? In terms of communication, as well as in terms of maybe some offer or maybe type of communication. Yes. So lost heavy buyer need to be connected by personalized calls with decent offers on a last purchase. Okay. I think let us get couple of answers. Then I started reviewing each one of them. Okay, right. So new customers, thanks, and talking about bestsellers, top customers, very personalized messaging. Okay, lost buyers, email with heavy time-centric discount, followed up with a call asking why and what we can do. Okay, top customer, educating about new launches and referral code. Okay, referral program, messaging to acquire new customers through them with incentivization. Okay. Send feedback message to lost heavy buyers. We have not seen the why, but let us know why. Okay. Hesitating offer nudges, time-based discount, hesitating sale, educating about the benefits, product USP, and we are targeting. Got it. I think we have a lot of answer. I think most of you are correct. Let me just quickly summarize. Let me also go through a couple of them as well. Personalized calls, hesitating, not thinking about the new product feedback. Personalized calls, solve the answer, feedback about the communication, hesitating, targeting ad about benefits, lost buyers call, connect, offer a good discount, hesitating, call to us. Okay, review about the product. Right. Cool, sounds good. I think most of you are on the right track. I'm glad that most of you can able to rate. Few of you mentioned that review bhi lena chahiye new customers. So that's really great. So I think first and foremost thing is new customers se feedback lena important. So what we generally do is we decide ki these all things we want from each of the customers to do. Okay. So for new customers hum kya chahte hain? So first of all, don't push about from my perspective, from our category perspective, don't push more about placing a new order, upseller, etc. Thank you for placing an order, why we exist, etc. Secondly, talk more about how to use that product, how to get maximum benefit out of it. For us, what we have realized that maximum of the people are not getting the proper results from the product because the usage is not
great और new usage is not proper. Suppose serum apply करना है तो कितने देर के लिए अप्लाई करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है, रब कितना करना है, एक्ने में आपको रब नहीं करना होता. So these all things are really important. Half of the people, or maybe 80% of the people, don't use the how to use guidelines which are written on the back of the product. We also send a leaflet along with the product, but वो use नहीं करते हैं लोग. So first and foremost thing is new customers or maybe other customers as well, after purchasing a product from us, make sure they understand how to use. एक वेकफिट का एग्जांपल देता हूँ. तो वेकफिट के बाद जनरली आपके पास कॉल आता है after buying from them couple of weeks के बाद कि are you satisfied with the product? Yes, because I think वो 90 days वारंटी भी होती है, 100 डे की उनकी, कि आप रिटर्न कर सकते हो, तो मेक श्योर करना होता है, उनको सेटिस्फाई करना है. बट उसके बाद एक कॉल पे पूछते भी हमसे कि 30 डेज के बाद आपको बेड को ना टर्न करना है, बिकॉज उससे उसकी शेल्फ लाइफ है या फिर उसकी लाइफ है वो ज्यादा टाइम तक रहेगी एंड उसकी जो क्वालिटी वो मेंटेन रहेगी. या स्मॉल थिंग्स. एंड आई फ्रैंकली वो मुझे पता नहीं था, उसके लीफलेट में भी था, उन्होंने एक अलग से लेटर भी दिया था मुझे एनवेलप में, उसमें काफी चीजें लिखी हुई थी. बट एज अ कस्टमर हम वो पढ़ते नहीं है एंड वी हैव सम प्री अज्यूम थिंग्स इन आवर माइंड, तो बेड तो ऐसे यूज करना. सो फर्स्ट इज review about feedback, how to use etc, asking for a review कि review क्या है. And then after अगर कस्टमर ने रिव्यू देते वेल एंड गुड, उसके बाद तो आप सेल कर दोगे. तो हम यहाँ पे एक चीज डिफाइन करते हैं, हम एक कस्टमर का वाव मोमेंट होता है. कुछ भी हम कस्टमर से फेवर लेना है हमें, हम जब वो कस्टमर सबसे सेटिस्फाइड है तब उससे फेवर ले सकते हैं. वो फेवर को हम डिफाइन करते हैं वाव मोमेंट से, राइट, कि जब से कस्टमर हैप्पी है. कस्टमर जब ऑर्डर प्लेस कर रहा है सबसे ज्यादा हैप्पी तब होता है वो, राइट. तो आपसे कुछ भी उससे बोलोगे, आपको बोलोगे रिव्यू करो तो रिव्यू कर देगा. आपको बोलोगे कि ओके कैन यू गिव सम पर्सनलाइज इन्फॉर्मेशन टू मी, आपका बर्थ डेट, आपके फैमिली में कौन कौन है एक्सेट्रा, वी विल प्लान समथिंग पर्सनलाइज फॉर यू और मे बी सम सरप्राइज फॉर यू, दे विल गिव. So we need to introduce that wow moment in the customer's life. Okay, वो customer life cycle में भी हो सकते हैं, वो वैसे भी हो सकते हैं कि आपने उसको इन्फ्यूज करा है उसकी लाइफ साइकिल में, या फिर जनरली भी ऑर्डर प्लेसमेंट के टाइम हो गए. तो अब वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है, तो उससे आपने सब कुछ चीजें कराई कि वो रिव्यू भी लिया, वो पॉजिटिव रिव्यू है तो बहुत अच्छा है, तो उससे वो अपसेल डायरेक्टली करा लोगे. नाउ द थिंग इज maybe you have the subscription program or a loyalty program. Ask the customer to purchase that loyalty program. Okay, तो न्यू कस्टमर से वहीं पे अगर वो कस्टमर परचेज कर लिया उसने लॉयल्टी प्रोग्राम, यू आर श्योर दैट न्यू कस्टमर इज नाउ माय टॉप कस्टमर, राइट. या हॉट प्रोस्पेक्ट भी टॉप कस्टमर ही होगा, लॉयल्टी प्रोग्राम परचेज कर लिया था उसने. तो ये चीजें आप कर सकते हो. अगर न्यू कस्टमर को क्रैक करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है. न्यू कस्टमर आपके जो, अगर मैं सब कुछ काउंट कर लूं जिन्होंने एक परचेज करे हैं, दे विल कंट्रीब्यूट टू अराउंड 40% ऑफ योर ओवरऑल सेगमेंट. अगर आप न्यू हो तो वो काफी बड़ा होगा, बट आप अगर आपके लास्ट के बायर्स देखोगे 3 months 4 months डाउन द लाइन, तो 40-50% तो आपके एक सिंगल परचेज वाले लोग हैं. उनको हमें एक्सपीरियंस बेटर करना इंपॉर्टेंट है. ओके, तो वहां पे हमें फोकस करना चाहिए. एंड लास्टली, इफ अ कस्टमर इज हेजिटेटिंग नॉट गिविंग ए रिव्यू, सो हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे. पीपल हु आर गिविंग अ पॉजिटिव रिव्यू, आस्क फॉर अनदर फेवर. People are not giving review, ask do we need to work on how they can give a review. Maybe we can ask, or maybe ये हमारे neutral लोग हो गए, we can maybe show them an ad, use another medium, WhatsApp use करके हमने इनसे review ले लिया rather than yes using email etc. And lastly जो हमारे detractors हैं, detractors नहीं जाने चाहिए. detractors को हमें neutral में convert करना है, promoters में convert करना है, because as a startup, as a new age brand, you need to rely on word of mouth. You need to work on your word of mouth. And word of mouth के लिए important है कि new customers आपकी बातें करना है. तो वो wow moments infuse करने के लिए important है आप उनको कॉल करो या फिर उनसे बात करो कि okay what happened, we will make sure कि, and आपको frankly speaking refund करना है उस order का. If they are not satisfied, do that as well. I know it will impact your P&L, but in long run it will pay you back. Trust me on that. ठीक है. So I think उन चीजों पे वर्क करना really important है. एक बार हम लॉस्ट हैवी वायर्स को और कवर कर लेते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है. तो लॉस्ट हैवी वायर्स पे थोड़ा पॉइंट आता है कि यार उसको दीज आर द कस्टमर्स, जनरली ये लॉस्ट हैवी वायर्स होते हैं, ईदर दे हैव अ बैड एक्सपीरियंस फ्रॉम योर प्लेटफॉर्म, ओके, और योर ब्रांड. डिपेंडिंग ऑन दैट हमें उन दोनों चीजें केटर करनी है. प्लेटफॉर्म का एक्सपीरियंस वर्स हो सकता है मे बी इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग में, बिकॉज मोस्ट ऑफ द D2C brand runs a heavy discount on the
Amazon, Flipkart, etc. during their sale, maybe आपके बिग बिलियन डे आ गया, अभी आपका पास्ट में जो ग्रेट इंडिया सेल थी, उसमें नायका के पिंक फ्राइडे हो गया, तो उसमें आप जो रन करते हैं डिस्काउंट, कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन या मैं आई शुड बाय फ्रॉम नायका, उसकी वहां से बाय करने का वही नहीं है, वहां से मेरे को बाकी प्रोडक्ट भी बाय करने होते हैं, तो वो वाला प्राइसिंग फैक्टर हो सकता है, एंड मे बी अ क्वालिटी पैकेजिंग हो सकता है। ये दोनों चीज पे वी नीड टू फोकस कि वेयर द कस्टमर्स आर गोइंग, एंड वो किस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, और मे बी अ ब्रांड प्रॉब्लम है, देन नीड टू वर्क ऑन द प्रोडक्ट, या फिर जो परसीव क्वालिटी आपके ब्रांड की या परसीव वैल्यू आपके ब्रांड की, उसको चेंज करना इंपॉर्टेंट है आपकी मार्केटिंग वैल्यू से। उसकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो हमने मीट नहीं करी, राइट? तो इसके अकॉर्डिंगली वो हैवी बायर आपका लूज हुआ होगा। ये दो ब्रॉडली रीजन है। तो फर्स्ट आइडेंटिफाई कि वो क्या मेथोलॉजी है, एंड उसके अकॉर्डिंगली मेक श्योर यू डिफाइन द कम्युनिकेशन अकॉर्डिंगली। हैवी बायर को if you want to give a surprise gift, you should give up some complimentary things to that customer as well. Personalized calls होने चाहिए। तो ये हमारे टॉप नॉच कस्टमर्स हैं। अगर ये लॉन्च हैवी बायर से अगर 5 to 10% भी लेके आते हो, टॉप में आ जाते हैं, तो आपका रेवेन्यू बहुत इंक्रीज हो जाता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल रियलाइज दैट your 10% of the consumers are giving you 30% of the revenue, राइट? तो वो कस्टमर बारह परचेज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अभी हम उनको वर्ड ऑफ माउथ काउंट नहीं कर रहे हैं, उनकी परचेज साइकिल ही देख रहे हैं, तो वो लोग काफी परचेज करते हैं हमसे, तो हमें वो टॉप कस्टमर्स इंक्रीज कर रहा है। सब्सक्रिप्शन बिजनेस में वो और भी ज्यादा है, 10% बिजनेस, 10% लोग 50% टाइप 60% टाइप बिजनेस दे देते हैं हमें। तो नीड टू मेक श्योर टैप टॉप कस्टमर्स कैसे इंक्रीज करेंगे। I'm not going into detail for each and every category. I have mentioned the same into the next slide. You guys can go through it कि क्या उसकी एक्टिविटी हो सकती है, क्या उसके एक्शनेबल टिप्स हो सकते हैं। तो हमने थोड़ा समराइज करने की कोशिश करी डिटेल में रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर ब्रांड्स। इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज एज वेल, बट दीज आर द स्टैंडर्ड थिंग्स व्हिच वी जनरली डू। मे बी लिमिटेड टाइम ऑफर प्लेस करना है, या फिर हमें कुछ रिवॉर्ड करना है उन्हें। सो दीज ऑल थिंग्स वी ट्राई टू डू for the customer sites. Okay, I think there are a couple of questions as well. What is top customer? Here's a photo. Bhavna, right? Top customer, latest products, offers, etc. New customer appreciate, right? Hesitating. Work. So I think जो lost heavy customer था, उसमें थोड़ा सा हमें better work करना था. बाकी I think it's totally in line. Cool. Sounds good. Let me go to the next section. राइट, तो अब केपीआई कैसे मेजर करनी है? आई थिंक आपका जो मॉर्निंग सेशन होगा, आई थिंक इट इज कवर्ड इन दैट केपीआई, जस्ट अ स्मॉल सेगमेंट कि अगर हम इफ यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन दोस केपीआई, यू विल स्टार्टेड सीइंग योर कर्व विल मूव टू अ मच बेटर एक्सटेंट कि आपके एलटीवीज ऊपर मूव होने लग जाएंगे, ओके, इन टर्म्स ऑफ लाइफ टाइम वैल्यू एंड द रिटेंशन रेट वैल्यू। कि सो हमारे लाइफ टाइम वैल्यू क्या है? 3 मंथ्स में कस्टमर ने कितना पे करा हमें, 6 मंथ्स में कितना करा, 12 मंथ्स में करा, 24 मंथ्स में। इफ योर ब्रांड हैज अ लाइफ टाइम और मे बी लाइफ साइकिल ऑफ मोर देन 24 मंथ्स, वही मेजर कर सकते हैं। रिटेंशन रेट भी 7, 3, 6, 12। सो एक और भी चीज है कि अगर जितनी ज्यादा लाइफ टाइम वैल्यू है, उतना हमें अपना स्टार्टिंग है वो मेजर उतने टाइम बाद से शुरू करना चाहिए। फॉर अस वी नो दैट कि 12 मंथ्स या 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स की लाइफ टाइम वैल्यू या लाइफ टाइम रेट है कस्टमर की, उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाता है। तो वही 6 मंथ्स ही हमारा इम्पैक्ट क्रिएट करने का टाइम है। तो वी स्टार्टेड मेजरिंग फ्रॉम फर्स्ट वीक ओनली, कि वीक 1 से क्या कितने लोगों ने रिपीट करा, वीक 2 में कितना करा। सो वी मेजर जनरली ऑन अ वीक लेवल कि हमारा रिटेंशन रेट क्या है, लाइफ टाइम वैल्यू कस्टमर की क्या है, हाउ वी कैन इंक्रीज दैट। इफ अ कस्टमर हैज परचेज अ लेसर एओवी प्रोडक्ट और वी कैन अपसेल मोर, तो वो स्ट्रेटजीज क्या है डिपेंडिंग ऑन टू बी डिफाइन बेस्ड ऑन द कस्टमर कोहर्ट्स, कस्टमर की पहली ऑर्डर का क्या हमें इनसाइट्स है उसके बेसिस पे। One more question, how should we, what should we do for the hesitating customer? Okay, let me go back. Right, for the hesitating customers, so अब ये कस्टमर हैं जिन्होंने आई थिंक आपसे 2 महीने पहले खरीदा, बट एक से 2 ही खरीदा है, राइट? सो मोस्टली फॉर दिस हेजिटेटिंग कस्टमर्स, द प्रॉब्लम जो हमारे लिए लाई करती है कि they were not sure about the brand. जो I think आप कस्टमर से बात करोगे तो बेटर आइडिया लगेगा, but what we think or what I think from my experience, they are still not sure about the brand.
कि यार खरीदा तो था, इम्पैक्ट शायद आया नहीं आया, या फिर ढंग से यूज करा नहीं करा. ओके, सो वी नीड टू, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल गेटिंग कस्टमर फीडबैक इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फॉर ईच एंड एवरी सेगमेंट. उससे आपको बेटर एनालाइज करता है कि प्रॉब्लम क्या है एंड उसको सॉल्व कैसे करना है. बट फॉर हेजिटेटिंग कस्टमर्स, go aggressively on your, if your CRM communication not working well, go aggressively on the paid mediums. So what we generally do, we decide a particular cohort for after a couple of months of acquiring a customer. If a customer is not converting, okay, or not placing a second order by my CRM funnels after trying a lot of things, okay, maybe offer, WhatsApp, or maybe something else, the customer is not converting, go for acquisition via paid medium again. Since remarketing campaign की cost कम होती है आपकी, तो आप generally सस्ते में acquire कर लेते हो. अगर वो 6 months पे customer चला गया, तो again उसकी cost increase हो जाएगी, right? So we make sure that starting with from this hesitating customer funnel, यहाँ से हम need attention से, यहाँ से हम शुरू कर देते हैं कस्टमर को पेड मीडियम पे टारगेट करना, गूगल फेसबुक पे टारगेट करना, टू मेक श्योर दैट we again acquire these customers from a paid medium and make sure that they are into our system. Okay, so communication शायद वर्क नहीं करता इस स्टेज पे, अब जो हमें भी लगता है. अभी लॉस्ट कस्टमर्स भी हो गया, सिमिलर ये स्ट्रेटजी है, ये लॉस्ट हो चुके हैं एक्चुअली, ऑलमोस्ट लॉस्ट नाउ. You can try going more aggressive in terms of offer. You can try maybe incentivizing into some other type of thing, maybe your top best thing, वो आप इसको गिफ्ट में दे सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बट थोड़ा मुश्किल होता है. तो ये सबसे क्रिटिकल फनल होती है, या फिर सबसे लेजी फनल है. ऑलमोस्ट लॉस्ट एंड हेजिटेटिंग थोड़ी कम होती है, ऑलमोस्ट लॉस्ट बहुत ही ज्यादा लेजी फनल है. लॉस्ट तो आई थिंक वो डॉर्मेंट ही हो चुका है, वो कभी आएगा. ओके, एनी अदर क्वेश्चंस हियर? Cool. Let's move ahead. Coming to a loyalty program. So इसमें हम डीप में नहीं जाएंगे, जस्ट आई थिंक ये एप्लीकेबल भी आई थिंक काफी कम लोगों के लिए होगा, सो फॉर अ फ्यू ऑफ द ब्रांड्स. सो लेट मी ओनली गिव द जिस्ट ऑफ इट. ओके, so when should I launch a loyalty program? First, your product market fit आ गया, you know your product is what, your product has a market fit as well as a sufficient market space. Fit के साथ साथ market space भी होना चाहिए available, कि maybe you are aiming for a 1000 CR company, so इतना market share के बाद इतना आ जाएगा. So that sort of a strategy you should make, कि my product market fit with the market size of X CR in the Indian market. So वो क्या है, right? Solved customer satisfaction, NPS आपका हाई है. Category brand can be purchased once in a month. तो आप loyalty program अगर आप बहुत बाद में परचेज करोगे, या फिर 3 months में एक बार है, तो शायद कस्टमर का परचेज ही नहीं करेगा, राइट? तो आप जो फ्रीक्वेंटली बाइंग कैटेगरी है उसमें लॉयल्टी प्रोग्राम वर्क्स रियली वेल. लाइक लिशियस, अर्बन क्लैब के लिए काफी अच्छा वर्क करता है, अमेजोन का प्राइम अच्छा वर्क करता है, बिकॉज देयर इज अ फ्रीक्वेंट बाइंग बिहेवियर. if you want to buy within a 3 months or maybe 6 months, जनरली वर्क नहीं करता है लॉयल्टी प्रोग्राम, बिकॉज कस्टमर को शायद याद नहीं रहेगा मैंने कुछ परचेज भी किया था, और वो शायद परचेज भी नहीं करेगा फर्स्ट उसमें, राइट? अब कुछ बेसिक थिंग्स हैं कि कस्टमर उसके लॉयल कस्टमर उसके लिए प्रोग्राम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है. तो सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट है लॉन्च करने के लिए. तो आपका प्रोग्राम डिजाइन कैसे होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन को सेंट्रिंग रख के, इजी टू यूज होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग हो गया, फंक्शनैलिटी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, ये करोगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा, ये टीयर है, ये सब है, थोड़ा वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है बहुत ज्यादा. तो कॉम्प्लिकेट नहीं करता, लेमैन को आ जाना चाहिए, सो दैट विद इन अ जस्ट ऑफ अराउंड 30 seconds to 1 minute वो समझ में आ जाना चाहिए. क्वालिटी एंड ट्रस्ट को और भी सिमिलर होना चाहिए कि जो हम जो चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं, जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दे रहे हैं, वो जैसे कोई आप फ्री प्रोडक्ट दे रहे हो तो क्वालिटी वो चीप नहीं होनी चाहिए, या फिर वो आपका स्लो मूविंग एसक्यू नहीं होना चाहिए. दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू विद योर लॉयल कस्टमर. एंड वो थोड़ा सा उसके लिए एंटरटेनिंग होना चाहिए, सरप्राइज गिफ्ट्स एंड एवरीथिंग यू शुड सेंड. एंड प्रोग्राम के थोड़ा नाम में भी ऐसा होना चाहिए कि यू शुड शो फील वैल्यूएबल, राइट? तो ये कुछ बेसिक्स हैं. तो चूज अ प्रोग्राम जिसका नाम थोड़ा रिलेट कर सके, वो जो उसको रिकॉल भी कर सके कि अच्छा ये वैल्यू है, उसको बता भी सके लोगों को. रियल वैल्यू होनी चाहिए प्रोग्राम में, ऐसा नहीं कि बस फ्री डिलीवरी दे दिया. मे बी फ्री डिलीवरी आपके सेगमेंट के लिए बहुत अच्छी वर्क करती है, या फिर बहुत ही डिसीजन मेकर है तो प्रोवाइड करो. अदरवाइज मार्केट में फ्री डिलीवरी बहुत स्टैंडर्ड है आजकल, so you should not only give free delivery, तो वो वर्क नहीं करेगा. कस्टमर की क्या वैल्यू है, कैसे हम उसको टैप कर सकते हैं, कैसे हम उसको जो इंफॉर्मेशन है उस पर हम कर सकते हैं. जैसे
maybe for us. Give me a second. I think there is an issue with the connection. Is the screen visible? Yeah, we can see. Yeah, sorry. Yeah. So for us, I think one thing worked really well ki for each and every, so planned goodness wala part हमने पहले loyal customer के लिए launch किया था. So it's worked really well. Then we launch for each and every customer. So customer values क्या हैं, कहाँ पे हम extra कर सकते हैं. उसके बाद I think there are other things, gamify कैसे कर सकते हैं. Enrollment बहुत easy होना चाहिए. Click of a button होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि वो एक बार buy कर रहा है उसके बाद देख के आगे जा रहा है. And उसमें उसके frictions points काफी reduce होने चाहिए. Click of a button. Maybe if a customer is buying a program, या तो customer is placing an order, उसके time में वो buy कर सकता है तो वो और भी easy है customer के लिए. So these are some of the basics. We need to deep dive deeper if you are designing a loyalty program. But loyalty program works really well. And starting से अगर हम कर देते हैं तो customer के लिए होता है कि हमारी loyal base है, इतना revenue तो मेरे लिए assured है future में. And these loyal customers are more onto the lines of कि जो हमें हेल्प करते हैं वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट करने के लिए. तो ये लॉयल्टी प्रोग्राम से वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट करना भी बहुत ईजी हो जाता है. बट बिकॉज इनको इनसे बात करना, इनसे कम्युनिकेशन करना बहुत ईजी हो जाता है. बिकॉज दे आर लॉयल कस्टमर, दे विल आंसर ईच एंड every communication, they will open all your emails, right? And when should I ask for a customer to buy loyalty program? The wow moment. तो wow moment is the most important thing. तो हमने जो डिफाइन करा है, आप वाव मोमेंट दो चीजों से कर सकते हो. पहला है कि जो आपके कस्टमर सबसे सेटिस्फाइड कब है, जब भी वो कुछ एक्शन करता है आपके वेबसाइट से, आपको रेट हाई करेगा, आपको परचेज, आपकी वेबसाइट पे परचेज करेगा, तभी उन चीजों पे आप मांगना शुरू कर दो. यू कैन ऑल्सो इंट्रोड्यूस वाव मोमेंट्स. देयर आर फ्यू थिंग्स, जैसे आप बोल सकते हैं हे इट्स अ बर्थडे, तो वो एक उसके लिए मोमेंट हो गया. इज अ बुक पावर ऑफ मोमेंट्स. आई वुड रिकमेंड रीडिंग दिस बुक. is really good. Here defined कि wow moment कैसे introduce कर सकते हैं. What are the number of ways जहाँ से हम introduce कर सकते हैं. And these are classical जो I think most of the digital brand generally do. जो आपसे जब भी वो feedback मांगते हैं, जब भी आपसे कुछ upsell करते हैं, वो wow moment पे ही होता है जनरली, right? जैसे आपकी upsell journey है, आपने add to cart करा, आपको पता है customer satisfied है, तब आपसे upsell करते हैं. या फिर जैसे Amazon में देखा है कि after buying a product उसके बाद एक और recommendation ले रही आती है, because they know you are now satisfied, you can buy much more product from us as well, right? So that type of communication you can also introduce into the system, right? I think there is a question. Please recommend easy way to use loyalty program for WooCommerce. Okay, got it. Let me do something. Let me check कि कोई plugin available है क्या WooCommerce का. So what I will be doing is let me do some research Shopify and WooCommerce के लिए. I will share few of the plugins to use maybe a loyalty program, maybe few of the CRM funnels, etc. जहाँ पे हम काफी easily automate कर सकते हैं and use those funnels. Okay. Let me tell you frankly, we use Moengage for the CRM funnels, and बाकी our partners are Netcore and Gupta, जहाँ से हम communication mediums drive करते हैं पूरा का पूरा. अगर कस्टमर लॉयल नहीं है तो लेट्स रिड्यूस चर्न. सो चर्निंग जर्नी काफी इजी है. तो मिंत्रा काफी चीज यूज करता है. मिंत्रा जनरली 6 आवर्स के लिए आपके वॉलेट में 200-300 रुपीज डाल देता है. बोलता है कि वी हैव गिव सम 300 bucks in your wallet, purchase in next 6 hours to avail that money. Okay, काफी अच्छी जर्नी होती है. What they are doing is they are only availing that offer into their high gross margin products. So you can choose a particular set of product, वहाँ पे आप दे सकते हो कि आपको पता है कि वो कस्टमर कन्वर्ट हो सकता है. तो ये काफी चर्न रिड्यूस करने का सकता है. ये आई थिंक लॉस्ट या फिर हेजिटेटिंग कस्टमर के लिए भी यूज कर सकते हैं. ओके. एंड ऑर्डर कंफर्मेशन एंड फीडबैक जर्नी. सो वहाँ पे भी हम व्हाट्सएप पे शेयर योर ऑर्डर स्टेटस बाय व्हाट्सएप एंड अदर चैनल्स, सो दैट यू कैन ऑल्सो मेक श्योर कि वहाँ पे भी आप कस्टमर से बातें कर सकते हैं. दूसरा आई थिंक हमने रीएक्टिवेटिंग फॉर डॉर्मेंट जर्नी. सो जो हमने RFM क्रिएट करा है उसको हम और डीप कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डॉर्मेंट यूजर के लिए, जो हमारे यूजर एंगेज नहीं है, शॉपिंग हमसे बहुत कम कर रहे हैं. तो उसके लिए हम ओमनी चैनल जर्नी कैसे बना सकते हैं. तो जो लास्ट में हमने डिफाइन किया था, जस्ट सॉरी, हाँ. सो अब इन कस्टमर्स के लिए योर लॉस्ट हैवी बायर्स में हम और सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं. तो व्हाट शुड बी
that segmentation strategy, and उसको हम divide करके क्या communication strategy use कर सकते हैं for lost heavy buyer, churn buyers, and यहाँ पे अब suppose you don't want to target each and every customer from paid channels, so what should be the filter you should use to buy maybe lost buyers, maybe churn buyers? तो maybe हो सकता है कि if a customer has purchased 20% higher AOV than from the other customers, उसको मैं target better करेंगे. Or maybe you know this is my best category. इसको जो customer buy करता है, the NPS is really high, so I will target that customer because मुझे पता है product satisfaction तो है. It's just that कुछ brand में dip आया जहाँ से वो issue आया, तो मैं उसको target करेंगे. तो we should define those points as well कि reactivate कैसे कर सकते हो और dormant users को. कुछ और डेटा क्लिक्स कर सकते हैं, थोड़ा सा एडवांस हो जाता है ये कि ब्राउजिंग डेटा वेबसाइट का हम कैसे स्टडी करके उस पे हम कम्युनिकेशन प्लान करें. चेंज कैटेगरी बाइंग पैटर्न्स क्या हैं जो हमने आई थिंक पहले डिफाइन किए थे, वो क्या है. काफी चीजें मैंने कवर कर ली हैं, बट इसमें कुछ चीजें जो यू कैन ऑल्सो डीप डाइव. डिलीवरी टाइमलाइंस के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो कि सपोज फॉर नॉर्थ ईस्ट डिलीवरी टाइमलाइन इज हाई, राइट. तो हम अगर मुझे पता है 10 दिन लगेंगे नॉर्थ ईस्ट जाने में, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको सेकंड परचेज में मिड में कराऊं या फिर 10 दिन बाद जर्नी शुरू करूं, बिकॉज आपका वाव मूवमेंट के बाद 10 दिन के बाद आप नेक्स्ट परचेज कराओगे या 15 डेज के बाद होगा, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, राइट. अगर डिलीवरी टाइमलाइन इज एक्सटेंडिंग बाय वेट rather than waiting कि कस्टमर का ऑर्डर डिलीवर हो, why can't you take an action or maybe apologize to the customer your delivery is delayed, let me do something about it. okay. कौन से उसके बाद कुछ और हो सकता है कि पेमेंट मेथड पे हम कैसे कर सकते हैं. सपोज वी नो दैट आरटीओ इज अ बिग प्रॉब्लम इन इंडिया मार्केट एंड वी नो दैट प्रीपेड मोड पे आरटीओ बहुत कम होता है, तो हाउ वी कैन मेक श्योर कि पेमेंट मैटर पे हम प्ले कर सकते हैं कि सपोज कम्युनिकेशन में लेट्स एन एक्स्ट्रा 5% ऑफर फॉर यू बट ओनली ऑन प्रीपेड, तो आपने उसको पीएनएल में मैनेज कर लिया कि आरटीओ भी नहीं हुआ और मैंने वहां पे भी गैप मैनेज कर लिया. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स. देयर आर अदर डबल क्लिक डेटा में हम बहुत कुछ कर सकते हैं. फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर का भी आप यू कैन क्रिएट अ रिकमेंडेशन इंजन, बहुत इजी एक्सेल में कोरिलेशंस बना के वर्क करना. तो यू कैन आल्सो डू हायर फ्यू ऑफ द पीपल और मे बी इंटर्न्स जिस पे वर्क कर सकते हैं. तो ये कुछ चीजें हैं. आई थिंक मोस्ट ऑफ थिंग्स आर कवर्ड, बट मैंने एक बार स्लाइड डाल दिया थी बिकॉज लास्ट टाइम फ्यू ऑफ द पीपल आस्क्ड मी, तो आई थॉट कि इसको एक बार इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, cool. I think that's the end of the presentation. Any questions you have or anything you have, feel free to jump in, answer, or maybe share your feedback. Great. Whoever has questions, maybe can raise their hands and then we can sort of ask. Yeah. Yeah, Dheeraj has a question. Yeah. Yeah, hi Abhishek. So I run a company called as Perfume 24/7. I think a lot of things that you said has a lot of utility for most of us. So how do we access the slides that you've given, because there's so much of matter, and I think every slide in itself is a task, for us. So I think there has to be a continuity for this. So what do you suggest? So we will share the slides with you guys. So, and if you have any question after that as well, feel free to drop me an email or maybe you can reach out to Shabab. We'll get connected over a WhatsApp or a call. We can help you in that ways as well. No worries. Sure. Perfect. Great. Any other questions around the session? If someone wants to share. Yeah, Apar. So turn on your video, huh? Yeah. One sec. Yeah. Hi, Abhishek. Abhishek, a lot of the things that I noticed were around tools. Like, are there hacks that you figured out to do it in a cost-effective way? Because most of us won't be able to possibly afford all the tools like Mamaearth, etc. So are there any suggestions around that? Sure. I think I will share the feedback. कि कौन से tools हम use कर सकते हैं. There are a couple of tools I know, but I'm not sure about their costings on Shopify. So let me get back on that. WhatsApp के I know a couple of tools. I'm invested in those in them as well. I will get back maybe by Monday or something. Over the weekend I will do a quick research and share the tools. It will be cost effective because around 20,000 to 50,000 में आ जाने चाहिए आपके पास, so that you can run those journeys on them. Okay, great. So on that note, we always, very close to sort of finishing the time. So I want to sort of take this time to sort of summarize. I hope one thing which we got from Abhishek's session very, very strongly was, it's all about customer satisfaction and then the ability to sort of come and talk to our customers.
Abhishek also sort of highlighted this importance of wow moments and using advantage for wow moments to sort of get something back from customers, and sort of segmenting our customers correctly, right, based on their RFM, which is basically recency, frequency, or monetization, to sort of address our communication relevant to what stage they're at. I also always like to sort of share this, Abhishek's session, one of those things where there are a lot of wow moments, like I said, packed in every slide, which you can really take and sort of put it. So again, I want to sort of thank Abhishek in more detail. And Abhishek, as you're aware, we sort of do that. Way to thank you is we turn on the music so everyone can sort of join me. First, everyone has to turn on their videos. So first, thank Abhishek for doing that. I'll just play our background music in the back end. 1 second. And then on that, 1 second. Yep. Put our hands in front. And we do a countdown of 3, 2, 1, and go team. Okay, ready? 3, 2, 1, and Go go team. team. Go team, everyone.